જે હાલ બેહાલ થતા જોયા હતા। યમુના નદીમાં પૂર અને એ પછી યમુના નદી કાંઠા તોડી શહેરમાં અંદર સુધી ઘૂસી ગઈ હતી અને લોકોની બેહાલી, લોકોની બરબાદી જોઈ હતી। કદાચ એવું ફરી થઈ શકે છે, આશા રાખીએ કે એવું ન થાય, પણ હથની કુંડ બેરેજના 18 દરવાજા તમામ દરવાજા ખોલી દેવામાં આવ્યા છે। ઉપરથી પાણીની ભરપૂર આવક થઈ રહી છે, કારણ કે ઉપર ઉત્તરાખંડ અને પહાડી વિસ્તારોમાં જબરજસ્ત વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને એના કારણે પાણીની ડેમનું રૂલ લેવલ જાળવી રાખવા હથની કુંડના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે અને ધસમસતો પાણીનો પ્રવાહ નીકળતો દેખાઈ રહ્યો છે। અને આ જ પ્રવાહ ધીમે ધીમે હવે દિલ્હી પહોંચી રહ્યો છે। યમુના નદીનું જળસ્તર ભયજનક સપાટીએ પહોંચી રહ્યું છે અને દિલ્હીવાસીઓના જીવ તાળવે ચોંટી રહ્યા છે। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में धीरे धीरे पानी भरने लगा है। फिलहाल यमुना के बहाव की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना उफान पे दिखाई दे रही है। ये जो लोहे वाला पुल दिखाई दे रहा है, दरअसल इसके निचले हिस्से में सड़क है और ऊपरी हिस्से से ट्रेन जाती है, लेकिन अभी भी करीब 1.5 से 2 मीटर जो है इस लोहे के पुल से पानी नीचे है। और फिलहाल जलस्तर की अगर बात करें तो 205.33 जो कि दिल्ली में यमुना के खतरे का निशान माना जाता है, उसको यमुना फिलहाल क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि वार्निंग लेवल जो है 204.5 मीटर कहा जाता है, तो वार्निंग लेवल को यमुना क्रॉस कर चुकी है, खतरे के निशान पे आ चुकी है। और कहा जाता है कि अगर यमुना की जो बाढ़ है या जो जलस्तर है 206 मीटर के करीब पहुंचता है, तो दिल्ली के निचले इलाकों से लोगों को हटा करके रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए ऊंचे इलाकों में ले जाने की व्यवस्था करनी होती है। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं